So let us start the session. Now we are going to start session number 4 from chapter number 6, integers. This is the last session, and we are going to complete subtraction of integers, some examples, and exercise 6.3. So let us start with the topic subtraction of integers. So first topic is additive inverse. So when a number is added to its opposite sign, opposite the sum, opposite, then the sum is always 0. जैसे 3 को हम लोग -3 से ऐड करते हैं और 4 को -5 से. So then we are getting the sum zeros. See some examples. 3 plus -3 0, -3 plus 3 0, right? So 3 plus -3 or -3 plus 3 both are equal to 0. So that means we can say that 3 is the additive inverse of -3 or -3 is the additive inverse of 3. Right? Now since 3 and -3 are the opposite of each other, so we find that the additive inverse of an integer is the same as its opposite. कोई भी नंबर ले लो, जैसे 144. 144 का additive inverse क्या होगा? -144. -45 का additive inverse क्या होगा? +45. Same number with opposite sign. Okay, you tell me what is the additive inverse of -10? +10. +10, very good. What is the additive inverse of 12? -12, right. Okay, so the opposite of an integer is called its additive inverse. Okay, so recall that subtraction is the inverse process of addition. The subtracting an integer means adding the opposite of that integer. Opposite means additive inverse. अगर हम लोग को subtract करना है तो जो second number का जो additive inverse है उसको add करेंगे. So that is the process actually. Okay. So we will see some examples using number lines. Subtraction of integers with the help of number lines. First example. Let us subtract 3 from 5. So how we will write 5 minus 3? So this -3 we can write 5 plus additive inverse of 3, that is -3. Okay, 5 plus -3. So how we will do? First we will move to 5. Okay, and from 5 now we have to add a negative integer -3. So we have to move left or right, right or left. माइनस ऐड कर रहे हैं इसमें. So we left side. 1, 2, 3. So what is the answer? Where we reached? We reached at 2, right? So therefore 5 minus 3 is equals to 2. Okay, we'll see one more example. Let us subtract 4 from -3. हम लोग देखो ये दोनों एग्जाम्पल में पॉजिटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. सो -3 -4 वी कैन राइट -3 प्लस -4. सो फर्स्ट वी विल मूव टू -3, देन वी हैव टू ऐड -4 टू द -3. चलो -3 पे आ रहे हैं हम लोग. नाउ वी हैव टू ऐड -4 नेगेटिव इंटीजर. सो वी हैव टू मूव लेफ्ट और राइट? लेफ्ट. वेरी गुड. 1, 2, 3, 4. कहाँ पहुँच गए? -7. So -3 -4 is nothing but it is -7, right? So what we observe in these two examples, when we subtracting a positive integer from a given integer means to move left from that integer. Is that clear? In the negative direction. दोनों एग्जाम्पल में हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन में मूव किए. ओके, लेफ्ट साइड में. ओके, नाउ वी विल सी सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव इंटीजर फ्रॉम द गिवन इंटीजर. अभी हम लोग क्या कंक्लूड किए? जब भी हम लोग पॉजिटिव इंटीजर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सो वी आर मूविंग लेफ्ट साइड, दैट इज टुवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन. नाउ वी विल सी व्हाट विल हैपन व्हेन वी सब्ट्रैक्ट नेगेटिव इंटीजर फ्रॉम एन इंटीजर. सो एग्जाम्पल 3. देखो -3 -4 from -3. What is the additive inverse of -4? +4. +4. Very good. So हम लोग क्या करेंगे? प्लस
नेगेटिव इनवर्स ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ -4 इज 4. सो -3 + 4 हो जाएगा. देखो -3 + 4 हो जाएगा. सो दैट मीन्स हम लोग पहले -3 पे जाएंगे, फिर उसके बाद +4. -3 पे जाके now we are adding positive integers. So where we have to move, left or right? Right. Right. Very good. 1 2 3 4. कहाँ पहुँच गए? +1. +1. That means the answer is 1. -3 minus of -4 is equals to 1. Okay, so this we can do without number line also. Just to explain the property, we are doing this activity using number line. Okay, one more example. Let us subtract one more negative integer, -6, from 2. So what is the additive inverse of -6? +6. +6. So 2 plus +6 हो जाएगा. Right? So we are following this one. Now first we will draw the number line. 0 से 2 पे आएंगे हम लोग. Now +6. For +6 we have to move right or left? Right. Right. So 1 2 3 4 5 6. So we reached at 8. So answer is 8. 2 minus of -6 is equals to 8. So what we observe, देखो हम लोग जब पॉजिटिव इंटीजर सब्ट्रैक्ट कर रहे तो लेफ्ट साइड मूव कर रहे थे. अभी नेगेटिव इंटीजर सब्ट्रैक्ट कर रहे तो we are moving towards the right direction, means right side, that is positive direction. So this is the observation. Okay, so now we are going to solve one more question. Example, find the value of -8 minus of -10. So here also we are subtracting a negative integer. So यहाँ पर भी हम लोग right side move करेंगे. Okay, so this can be written as -8 plus 10. दूसरा तरीका क्या है, देखो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा. सो विल राइट +10. सो फर्स्ट वी विल जंप टू -8. -8 लॉन्ग जंप पहुंच गए. नाउ +10. सो वी हैव टू मूव राइट और लेफ्ट? राइट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. What is the answer? 2 plus 2. Right? तो हम लोग फाइनली 2 पे पहुंच गए. दैट मीन्स -8 minus of -10 is equals to 2. Right? So hence to subtract an integer from another integer, it is enough to add the additive inverse of the integer that is being subtracted to the other integer. That we have seen from all the examples. Now we are going to subtract without using number line. उसको कैसे करना है देख लो. Subtract -4 from -10. That means we will write -10 minus of -4. देखो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा. So we can write -10 plus 4. ठीक है. और दूसरे तरीके से हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, प्लस करके इसका एडिटिव इनवर्स, प्लस करके उसका एडिटिव इनवर्स. That is same thing we are getting, -10 plus 4. Now both are of different sign. So we have to subtract, we have to find the difference between 10 and 4, that is 6. Now which number is greater, 10 or 4? 10. What is the sign of 10? Minus. So -6 is the final answer. ये चीज समझ में आ गया? Okay. So now subtract +3 from -3. So that is -3 minus +3. So what is the additive inverse of +3? -3. -3. तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? -3 plus -3. Now both are of the same sign. तो ऐड करना है और सेम साइन लिखना है. So 6, same sign is minus, so -6. Right? So now we are going to start exercise 6.3. So let us start with the first question. Find 35 minus 20. अभी देखो यहाँ पर 35 minus 20 हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं because this is simple subtraction and 35 minus 20 is 15. ठीक है.
नेक्स्ट अगर डायरेक्ट नहीं करना है तो कैसे कर सकते हैं, देखो 35 प्लस additive inverse of 20 is minus 20. Now both are of different sign, so find the difference of these two numbers, that is 15. Now which number is greater, 35 or 20? 35. 35. What is the sign of 35? Plus. So the final answer is plus 15. इसको ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो और यू कैन सॉल्व डायरेक्टली ऑल्सो. ओके, नाउ सेकेंड वन 72 माइनस 90. ओके, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 72 प्लस माइनस 90. नाउ दिस टू आर ऑफ डिफरेंट साइन, सो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दिस टू नंबर. 90 और 72 का डिफरेंस 18 होता है. नाउ विच नंबर इज ग्रेटर, 72 और 90? 90. 90. व्हाट इज द साइन ऑफ 90? Minus. माइनस. सो फाइनल आंसर में माइनस लिखना है, दैट इज माइनस 18. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सी. minus 15 minus of minus 18. I told you just now when we solve directly इन दोनों को प्लस करना है, माइनस इंटू माइनस प्लस. तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, माइनस 15 प्लस 18. नाउ सी दिस टू आर डिफरेंट साइन, तो दोनों का डिफरेंस निकाल लो, दैट इज 3. नाउ 15 और 18 में कौन सा बड़ा है? 18. 18. व्हाट इज द साइन ऑफ 18? Plus. Plus. So answer is plus 3, or simply we can write 3. Next question, minus 20 minus 13. इसको हम लोग प्लस करके इधर माइनस लिख सकते हैं. Now see both are of same sign, so we have to add the numbers and put the same sign. So 20 और 13 33 होता है, and the same sign is minus. So final answer is minus 33. Now next question, 23 minus of minus 12. Just now I told these two will become plus. So 23 plus 12. अब ये simple addition हो गया. So the answer is 35. Now the last question, minus 32 minus of minus 40. Again minus into minus it will become plus. So minus 32 plus 40. Again दोनों का साइन अलग अलग है, तो फिर से क्या करेंगे हम लोग, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, उसके बाद बड़े नंबर का साइन लगाना है, राइट? सो व्हाट इज द डिफरेंस? 8. एंड विच नंबर इज द ग्रेटर नंबर? 40. 40. व्हाट इज द साइन ऑफ 40? Plus. Plus. So plus 8 is the answer, or we can write simply 8, right? So this is the first question. Now we are moving toward the second question. Fill in the blanks with greater than, less than or equal to sign. So first question, minus 3 plus minus 6. ध्यान से देखो, मैं यहीं पे कर रहा हूँ, both are same sign. So we'll add the numbers and we'll put the same sign. So 3 plus 6, 9, and the same sign is minus, so minus 9. Next, these two will become plus, so minus 3 plus 6 हो जाएगा. अब ये दोनों का साइन अलग अलग है, so दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 3, and we will put the sign of the greater number. Which is greater, 6 or 3? 6. 6. What is the sign of 6 here? Plus. Plus. So answer is plus 3, right? And minus 9 is less than 3. So here what symbol will come? Less than. This is clear? Yes, sir. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा. सो माइनस 21 प्लस 10. नाउ अगेन द डिफरेंस ऑफ दिस टू, द साइन ऑफ दिस टू 11. नंबर्स, द साइन ऑफ दिस टू नंबर्स आर डिफरेंट. सो इन दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा 11, एंड वी हैव टू पुट द साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर. सो विच इज ग्रेटर, 21 और 10? 21. What is the sign of 21? Minus. So minus 11. Next number, देखो दोनों नेगेटिव है, दोनों सेम साइन है, so we have to add the numbers, then we have to put the sign. So 31 और 11 42 होता है, so minus 42.
एंड -42 और -11 में -11 बड़ा है, राइट? दिस नंबर इज ग्रेटर, Yes, sir. so we have to put greater symbol. So this is second question. Now third question में ध्यान से देखो, मैं एक मिनट पूरा रफ कर दे रहा हूँ. माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, दैट मीन्स 45 प्लस 11. अब ये सिंपल एडिशन हो गया, so we are getting 56, 56. right? Now these two numbers are of opposite side, so we have to find the difference, that is 53. Now we have to put the sign of the greater number. Greater number is 57. What is the sign of 57? Plus. Plus. So plus 53. Now 56 is greater than 53. So here we have to put greater than symbol. ये less than था और ये greater than था, right? अब लास्ट में आ गए हम लोग. देखो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ठीक है? सो -25 plus 42, right? So both are of different sign, so we have to find the difference, that is 17, and we have to put the sign of the greater number. So 25 or 42, which number is greater? 42. And what is the sign of 42? Plus. Plus. So plus 17 is the left hand side, and right hand side देखो, minus into minus plus हो गया. So minus 42 plus 25. So again they are of different sign, और already difference हम लोग 17 निकाल चुके हैं, but here the greater number is 42, and what is the sign of 42? Minus. Minus. So minus 17. So 17 जो है minus 17 से बड़ा है, so we have to put greater than symbol here. Okay, so this is the second question. Now we are moving toward the third question. Fill in the blanks. -8 में क्या ऐड करने से 0 आएगा? उसका एडिटिव इनवर्स. उसका एडिटिव इनवर्स. एडिटिव इनवर्स इज +8 और सिंपली 8. ओके, 13 में क्या ऐड करने से 0 आएगा? -13. वेरी गुड. इसका एडिटिव इनवर्स. एंड 12 प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ -12. 0. ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक मिनट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कैसे करना है. -4 प्लस डैश इज इक्वल्स टू -12. इसको मैं एक दूसरे तरीके से बता रहा हूँ, तो ध्यान से देखो. वी विल राइट इज एट x, ठीक है? -4 को इस तरह शिफ्ट करो. इफ यू शिफ्ट -4 टू राइट हैंड साइड, इट्स साइन विल चेंज. लेफ्ट साइड में -4 है, राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा? साइन. यस, वेरी गुड. +4. +4. अब ये दोनों का साइन अलग अलग है, तो हम लोग क्या करेंगे? व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड द डिफरेंस. -12 और 4 का डिफरेंस है 8, राइट? और 12 और 4 में कौन सा बड़ा है? 12. What is the sign of 12? Minus. So we have to put minus. So यहाँ पे -8 आएगा आंसर. अभी इसको भी वैसे ही करेंगे हम लोग, ठीक है? जैसे ये वाला किए. क्या करेंगे? x -15 is equals to -10. Now shift -15 to this side, so it will become +15. Very good. It's the sign will change. इसको ट्रांसपोजिंग बोलते हैं. ट्रांसपोजिंग तुम लोग क्लास 7th में पढ़ोगे, ठीक है? तो अभी एडवांस में पढ़ लो. +15. अब ये दोनों का साइन अलग अलग है, so we have to find the difference. The difference is 5, and we have to put the sign of greater number. Greater number is 15. What is the sign of 15? Plus. Right. So we can write simply 5 also. +5 or simply 5. So this is the answer. Okay. So now we are moving toward the last question of this exercise. एक मिनट, जो आंसर आया था उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है? नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज इज फोर्थ क्वेश्चन. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द फोर्थ क्वेश्चन. ध्यान से देखो, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा.
Now these two are of same sign, so we will add these two numbers and then we will put the sign. 7 plus 8 is 15. Put the sign, same sign, minus 15. Now these two are different sign, तो दोनों को subtract करेंगे 10 and we have to put the greater number sign. So 15 और 25 में कौन सा greater है? 25. What is the sign of 25? Plus. So plus 10 or simply 10. Next, ध्यान से देखो, next में minus 13 plus 32 minus 18 minus 1, ठीक है? तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? ये माइनस को एक तरफ शिफ्ट करेंगे. We will shift to one side. इसको यहाँ शिफ्ट कर लो, यहाँ पे लिख लो. So 32 plus minus 8 plus minus 1 plus 13. Rearranging, इसको बोलते हैं rearranging. अभी देखो ये तीनों माइनस में. Are you able to identify? All are negative. Yes, sir. Same sign. So we have to add the numbers. 8 plus 1 9 plus 13 22. Put the same sign. That is minus 22. अब now these two numbers are of different sign. So subtract these two numbers 10 and put the sign of greater number. Which is greater? 32. What is the sign of 32? Plus. So plus 10 is the answer. Now we'll move towards the next C. Minus 7, minus 8, minus 90. तो पहले ये दोनों का ऐड कर लो, सेम साइन है. So 7 plus 8 15. Put the same sign, minus 15, minus 90. Okay, again both are of the same sign. Add these two numbers and put the same sign. That is 105. right, minus 105. Right. So now we are moving toward the last question, that is D bit. 50 minus of minus 40 minus of minus 2. तो ध्यान से देखो, ये माइनस इंटू माइनस से प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा. So we are getting 50 plus 40 plus 2. This step is clear to all of you? Yes, sir. Now we have to simply add all these numbers. 92. 92. Very good. 92. So this is the last question of this session. Now we are moving toward the assignment section. Right? So 4 questions are there. I will post through Google Classroom. So that's all for today's session. Thank you. Thank you very much.